হয় নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে অমিতপাল সিং। অমিতপাল সিঙে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে। যোৱা 2023 বৰ্ষৰ 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাবৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছিল অমিতপাল সিঙক আৰু 20 এপ্ৰিলত তেওঁ সহযোগীসকলক লৈ অহা হৈছিল। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে অমিতপাল সিংসহ তেওঁ 9জনকৈ সহযোগী। যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা প্ৰতিটো খবৰ অমিতপাল সিঙক বা তেওঁৰ সহযোগীসকলক যেতিয়া যোৱাটো বৰ্ষত লৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰতিটো খবৰে দিছিল কিদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে খালিস্তানী সমৰ্থকসকলক খালিস্তানী অন্যতম সমৰ্থক অমিতপাল সিঙৰ লগতে 9জনক ৰখা হৈছে। প্ৰতিটো খবৰ আমি এনেকৈ টিভিক দৰ্শকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আমি জানিবলৈ দিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া অমিতপাল সিঙে পঞ্জাবৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা খাৰুৰ চাহিবৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে আমি পোনে পোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ যিজন অধিবক্তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৱৰ্তন ভৱনত প্ৰথম NKTV আমি গোটেই খবৰটো লৈ আহিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ যিহেতু বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এজন নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে, তেওঁ বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এই গোটেই পৰিৱেশটো। তেওঁ খাৰুৰ চাহিব যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সৰ্বমুঠ ভোট লাভ কৰিছে 4,44,030টা আৰু 1,97,120টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু তেওঁ বিপৰীতে 24জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে খাৰুৰ চাহিব এই সমষ্টিৰ পৰা। বৰ্তমান আজি আমি কালি যিহেতু নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ পঞ্জাবৰ যিজন অধিবক্তাই গোটেই আচলতে কেছটো হেণ্ডেল কৰি আছে অমিতপাল সিঙৰ। তেওঁ আহি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ বিমান যোগেৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। राजदेव सिंह खालसा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एडवोकेट। अमितपाल सिंह ने खारूर साहिब से चुनाव जीता है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता है और पंजाब में सबसे बड़ा मार्जिन है 1,98,000 वोटों का 1,98,000 मीनिंग बाई अबाउट 2 लाख। तो उनका जो था जो बिरसा सिंह बलटोहा था अकाली दल का, उसकी जमानत जब्त हो गई और भाजपा का जो उम्मीदवार था उसकी भी जमानत जब्त हो गई। कौन आए हैं आप पंजाब से? नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ। मैं तो मेरी तो पहले मुलाकात तय थी तो पहले परमिशन ली हुई थी। आज मैं तो अकेला ही आया हूँ पंजाब से। सरकार का जो सिस्टम का जो नीति नियम है जिसके बाद आप लोगों ने यहाँ से उसको वो जाना पड़ेगा पंजाब कैसा? देखो, पंजाब में तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो भगवंत मान की जो आम पार्टी की सरकार है उसने भाई साहब पर लगाया था, मगर ये भगवंत मान की सरकार की बीजेपी से मिली पुट थी क्योंकि पंजाब में ही रख सकता था भगवंत मान इनको NSA लगाकर, मगर क्योंकि बीजेपी की जो सेंटर की सरकार थी उन्होंने अपने असर से जो असम की बीजेपी सरकार थी उसके साथ बात करके इनको डिब्रूगढ़ में भेजने का जो है प्लानिंग बनाई थी, जो भगवंत मान ने उसको मंजूरी दी। तो अब देखना है कि बीजेपी पहल करती है कि भगवंत मान सरकार पहल करती है। बीजेपी ये कह रहे थे कि 13 की 13 सीटों पे हम जीतेंगे, तो वहाँ पे 3 पे जीते हैं, 10 सीटें हार गए। और भाजपा कहती थी बहुत बड़े जो है पदर पे हम चुनाव जीतेंगे, इनका एक भी मेंबर नहीं आया, तो इनका खाता भी नहीं खुला पंजाब में जो बीजेपी का है। तो ऐसी हालात में क्योंकि दोनों पार्टियों को पराजित किया गया है, बहुत बड़ी हार हुई है, इसलिए दोनों पार्टियों में क्या यदि बीजेपी फैसला करती है तो सीधा पंजाब भेज देगी कि हमने इनको डिब्रूगढ़ जेल में नहीं रखना, जहाँ से रिहाई हो जाए। और यदि भगवंत मान सरकार फैसला करती है वो अमृतसर के DC से लिखाना पड़ता है कि अमन कानून की स्थिति को अब कोई खतरा नहीं है, तो फिर भी रिहाई हो जाएगी। और परिवार का कोई लोग आया है आज? नहीं, मेरे के साथ कोई नहीं, उनका है, कोई बात नहीं हुई मेरी, तो मैं तो आप ही आया हूँ। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगा डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब ले जाने के लिए जो प्रोसेसिंग होगा आप लोगों का? नहीं, तो लेकर भी जाएंगे जहाँ पर ही रह कर देंगे, तो मालूम नहीं पड़ता। आप लोग अमितपाल सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, कोई प्रचार नहीं हुआ चुनाव के लिए, वो सेंट्रल जेल में था, वहाँ माहौल कैसा था? माहौल जो है वो भाई अमृतपाल सिंह को सिखों का एक नेता, राजसी नेता और धार्मिक नेता माना गया है और तमाम पंजाब ने भाई अमृतपाल सिंह को एक ही नेता मान लिया है।
तो अब पंजाब के नेता भाई अमृतपाल सिंह ही हैं। तो पंजाब में माहौल है जो वो भाई अमृतपाल सिंह के हक में है। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में जब था उस समय कोई कैंपेनिंग भी नहीं हुआ, कैसे संभव हुआ ये? नहीं, कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, इनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। ये अमृत प्रचार कर रहे थे पंजाब में और पंजाब को नशा रहित कर रहे थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। तो पंजाब का बच्चा बच्चा जो है वो सरकार के खिलाफ था। वो भगवंत मान सरकार जिसके 92 में जो हैं वो एमएलए हैं, वो इस तरह से हार जाए पंजाब में, एक बार पहली दफ़ा से हार जाएं, तो इसमें साफ है कि भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी सिख धर्म पर एक हमला था और सिख धर्म इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमृत संचार करने वाले को, नशा छुड़ाने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भगवंत मान सरकार जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नैतिक तौर पर भी हार गई और कानूनी तौर पर भी हार गई। जनमत बहुत बड़ा मिला है, जो फतवा मिला है आम जनता का, वो जनमत जो है वो भाई अमृतपाल सिंह के हक में मिला है और जो फतवा है इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मिला है। और आम पार्टी को इतना बड़ा सेटबैक हुआ है इससे कि अब उनकी हिम्मत नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि मजबूरी है इनको रिलीज करने की, रिहा करने की। अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट में कितना कैंडिडेट खड़ा हुआ? उनके अगेंस्ट में 23 और हुए थे। 23 और हुई थी। हाँ, 23 हुए थे, 24 थे जो उनके थे। मेनली उनका जो से दूसरे नंबर पर जो है कुलवीर सिंह जीरा था, जो कि कांग्रेस का उम्मीदवार है। और आम आदमी पार्टी का आम आदमी का लालजीत सिंह भुल्लर जो ट्रांसपोर्ट मंत्री था पंजाब का, वो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर मनजीत सिंह मन्ना जो बीजेपी का था, वो चौथे नंबर पर है। जो बादल की पार्टी श्रोमणी अकाली दल का हाथी है, उसका कैंडिडेट बिरसा सिंह बल्टोहा, वो 5वें नंबर पर है। बाकी तो वैसे ही थे, उनको किसी को 10 वोटें पड़ी, किसी को 20 पड़ी, किसी को 50 पड़ी। मेन तो ये 5 कैंडिडेट थे उनके खिलाफ। एक साल 3 मंथ रनिंग है आप डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में। जो अमृतपाल सिंह का 23 अप्रैल 2023 में आया था डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में जो उस टाइम जो सिद्धांत लिया था, आपको मैंने एनकेटी की तरफ से वहाँ सर्किट हाउस में मिला था। आप पहले बताया था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर अमृतपाल सिंह ने अब थारूर साहिब से एक कैंडिडेट। हाँ जी, 24 अप्रैल को मैंने बताया था। हाँ, सर्किट हाउस में भी ये जेल से निकलते ही मैंने ये ऐलान किया था। पहले एनकेटी के सामने ही आपने बताया था उस दिन। हाँ। तो उसके बाद जो सिलसिला जारी रहा, ये बड़ी मुद्दा है, इतना मार्जिन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेंट्रल जेल में। हाँ, जो सेंट्रल जेल में, क्योंकि कंपेन तो उनकी बच्चे ने की है। कंपेन की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। कंपेन तो बच्चा उनका कंपेनर था, तो बच्चे ने कंपेन की है। सारा पंजाब उनके साथ था, सारा सिख समाज उनके साथ था। तो सेंट्रल जेल में उनका बैठना एक और ऐसा फैक्टर था जो उनकी फेवर में गया। अब माहौल कैसा है पंजाब में? इतना बड़ी मुद्दा, इतना ज़्यादा मतदान से जीता है। हाँ, माहौल पंजाब में है कि उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। ये पंजाब में माहौल बना हुआ है और सरकार इसको फेस नहीं कर सकेगी। जो गवर्नमेंट है फेस नहीं कर सकेगी, उनको रिलीज करना पड़ेगा। আমি প্ৰথমে আমি এইটো বৰ্ষৰ আমি 24 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আমি গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিলোঁ। ডিব্ৰুগড় চাৰ্কিট হাউচত যিজন ৰাজনীতি খালছা এক্স পাৰ্লিয়ামেণ্ট মেম্বাৰ তথা অমৃতপাল সিঙৰ এজন অধিবক্তা হয়। অধিবক্তা ইতিমধ্যে গোটেইখিনি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। পঞ্জাৱত এতিয়া বিজয় মহল, কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকি, যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত থাকি অমৃতপাল সিঙে 1,97,120টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যোৱাটো 2023 বৰ্ষৰ 23 এপ্ৰিলত অমৃতপাল সিঙক লৈ অহা হৈছিল আৰু 22 এপ্ৰিলৰ দিনাখন অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগীসকলক 2023 বৰ্ষৰ 22 এপ্ৰিলত এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছিল। বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি প্ৰতিটো খবৰ কিদৰে লৈ অহা হৈছিল, কেনেকৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত লৈ অহা হৈছিল, প্ৰতিটো খবৰ আমি দিছিলোঁ। দাৰৰ খবৰ দ্বাৰাই আমি এনকেটিভিৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ। যিখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ 1800
1960 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ব্ৰিটিছ যুগতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু অমিতপাল সিঙৰ লগতে তেওঁ অন্যান্য 9জন সহযোগীক এইবাবে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছিল। পঞ্জাৱৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত অৱস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, যাতে যিসকল খালিস্তানী সমৰ্থকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কাৰ্যকলাপ ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদস্থৰ পৰা কনিষ্ঠ পদস্থ ব্যক্তিসকলে সষ্টম হৈছিল। প্ৰশাসনৰ দিশত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছিল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আচলতে কেণ্ডিডেট হিচাপে যিজনে নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে 24জনকৈ তেওঁ বিৰোধীক পৰাস্ত কৰি যথেষ্ট সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। 2024 বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ 24 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজদীপ সিং খালছা, যিজন অমিতপাল সিঙৰ অধিবক্তা, যিজন এক্স পাৰ্লিয়ামেণ্ট মেম্বাৰ হয় পঞ্জাৱৰ, তেওঁ কৈছিল যে অমিতপাল সিঙে তেওঁ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিত্ব কৰিব বুলি, আৰু খবৰটো আমি প্ৰথমে ওলাইছিলোঁ। আৰু আজিও পোনে পোনে যিজন ব্যক্তি অমিতপাল সিঙৰ অধিবক্তা আহি পঞ্জাৱৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু তেওঁ জনাইছে পঞ্জাৱত ইতিমধ্যে গোটেই যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁক লৈ যাবৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আহি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে NKTV তৰফৰ পৰা আমি তেওঁৰ লগত বিনিময় কৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। এই কাৰাগাৰতে বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 1,97,102টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰা যিজন অমিতপাল সিং বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত, আৰু বৰ্তমান তেওঁ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে। আৰু এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে থাকি তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নচলোৱাকৈ ইয়াৰ পৰাই তেওঁ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। যেনেকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ পাৰ্টি হৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা অখিল গগৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল, তেনেকৈ এই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অমিতপাল সিং বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। অমিতপাল সিঙক লৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু NKTV তৰফৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ 2023 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ সহযোগীসকলক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ অহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 এপ্ৰিল 2023 চনৰ যিদিনাখন অমিতপাল সিঙক ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছিল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে প্ৰতিটো খবৰ আমি দিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে অমিতপাল সিঙে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে থাকি এক নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেমেৰাত দিনেশ দাসৰ সহযোগত মই হিৰণ্য কৌশিক বৰা, NKTV।